So this is the question number 5 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So before answering this one, I want to brief regarding the dictionaries in Python. So as we already told you, dictionary के अंदर क्या होता है आपका की वैल्यू पेयर, where की और वैल्यू सेपरेटेड किससे होते हैं आपके कॉलन से, where key will be on the left hand side and value will be on the right hand side of the column, and each key value pair are separated by commas. Now one more point to discuss about dictionary is कि डिक्शनरी में सीक्वेंस डाटा टाइप्स यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल की तरह इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए इट रिलाइज ऑन द कीज ऑफ द डिक्शनरी. ओके, now coming back to our question, let's see the code and then we'll try to figure out what will be the output of this particular code. तो इस केस में अगर बात करूं तो आपको डिक्शनरी गिवन है डी, इसके अंदर क्या है, कीज क्या है आपकी अनन्या, रिहाना, सनी एंड डेविड, और उनकी रेस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या है 90, 95, 92 एंड 99. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है आपकी, डेविड इन डी, 90 इन डी एंड सेपरेटेड बाय हैश. तो फर्स्ट थिंग क्या है, डेविड इन डी, दैट मीन इट इज आस्किंग कि जो पर्टिकुलर की है हमारी वो डेविड वो डिक्शनरी में है या नहीं है. तो डिक्शनरी में डी है हमारा, यस, तो आंसर क्या आ गया आपका ट्रू फर्स्ट केस के लिए. सिंस इट इज सेपरेटेड बाय हैश तो वैल्यू क्या आ गई आपकी हैश. Now it is asking 90 in D. That means it is asking whether 90 as a key is available in the dictionary or not. तो in this case it is false. ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी के अंदर आपकी इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. फॉर इंडेक्सिंग इट फॉलोस कीज. Okay, if you wish you can run this one on the IDE as well. You will get the same output. Hence for this one option number B is the correct one. Now we have a practice question for you. You need to answer this one in the comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.